हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आज की इस वीडियो हम बनाएंगे इस F1 RC कार को। फ्रेंड्स, कार की स्पीड बहुत ज़्यादा, आप इसको इंडोर तो चला नहीं सकते। अगर आप इसको आउटडोर भी चलाते हो तो प्लीज़ इसको फ्लैट सरफेस चलाना, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। और फिर इस कार को बनाने के लिए मैं जितने पार्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही प्रेस करना उसके पास वाला बेल आइकन को। फ्रेंड्स, मैं वीडियो रैंडमली अपलोड करता हूँ तो प्लीज़ उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स हमारी कार तो कंप्लीट हो चुकी है, बस इसकी बॉडी बनानी है। मैं सोच रहा था इस कार को F1 कार जैसा लुक दूँ। सबसे पहले चलिए इसे टेस्ट कर लेते एक बार। सबसे पहले हम रिमोट ऑन करेंगे, उसके बाद कार को। ये फ्रेंड्स सेफ्टी के लिए होता है। मैंने इस रिमोट को सबसे लो स्पीड पे करके रखा है, अब देख सकते हो, लो मीडियम हाई। मैंने इसको लो पे करके रखा है। स्पीड तो बहुत है यार। वो खतरनाक सच में। फ्रेंड्स चलिए इसकी बॉडी बनाते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है।
फ्रेंड्स मैं अभी इस कार को इसकी फुल स्पीड में नहीं चला सकता हूँ क्योंकि यहाँ की इतनी जगह नहीं है कि स्पीड पकड़ सके। और फ्रेंड्स ये कि इतनी स्पीड में किसी से टकरा गई तो मुझे नहीं पता क्या होगा। फ्रेंड्स इसके लिए एक हाईवे चाहिए जिस पे फुल स्पीड पर चल सके। तो अभी तो मैं यहाँ पे इसको फुल स्पीड में नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपने देख लिया होगा। फ्रेंड्स इसको फास्ट ना चलाने का एक और रीज़न ये है कि इस कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है और इस जगह पर तो किसी से ज़रा सी चीज़ से भी टकरा सकती है नीचे से। आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, मतलब इतना सा होगा सिर्फ।